हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए MS एक्सेल की एक और वीडियो लेके आए हैं। सो टुडे वील बी लर्निंग हाउ टू कैलकुलेट HCF इन MS एक्सेल। सी व्हाट HCF इज। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हम लोग छोटे थे हम लोगों ने मैथ्स में ये सीखा हुआ है HCF कैसे निकाला जाता है। इफ़ यू आर गिवन 2 और 3 नंबर्स तो उसके बिहाफ पे हम क्या निकालते थे, HCF। हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है जिससे एक पर्टिकुलर नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। So in this particular case also we'll be calculating HCF. See, you can see that numbers are given over here. First number, let's say it's 6. Second one is 20. And in next case, first number is 12 and the second one is 18. And in the third case, first number is 34 and the next one is 96. If we want to calculate HCF, we can calculate in within fraction of seconds by using a particular formula. So what the formula will be? Let's see. HCF and GDC are the same thing. So we'll write down is equals to, then we'll write down GCD, bracket open. Then we'll be selecting the numbers, the series of the numbers. If it is 2, 3, 5, whatever the series is, we'll select the complete series. So here we are having only two numbers, 6 and 20. So I'm selecting these two numbers as a series. Then I'll be closing the bracket, and what I'll be doing is enter. Just press enter. Here it is. See, the number is 2. Ultimately it will be last highest common factor that is coming up is 2. And on the others also we can select the blank cells and press Ctrl D. So the answer is here. The GCD is here. HCF is has been calculated now. तो HCF हमारा निकल चुका है। ये हमारे फॉलोइंग आंसर्स आ चुके हैं। बार बार फॉर्मूला अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ़ यू कैलकुलेटेड इट वंस तो सिलेक्ट द सेल्स वे यू नीड द फॉर्मूला एंड देन प्रेस Control D or copy the formula Control C and then press enter. So this is very easy. In fraction of seconds you are able to calculate your HCF. That's it for today. See you in the next video. Bye bye.